scheme. One is Rashtriya Swasthya Bima Yojana and another is Mukhyamantri State Healthcare Scheme. Also, we are now switching over to Himachal Pradesh Universal Health Protection Scheme in a few months. Everybody knows about the RSVY, so I will not talk about the RSVY. In Himachal Pradesh, we have done an innovation in health insurance, that is RSVY Plus. We are providing the top-up coverage of rupees 1.75 lakh to all the RSVY card holders, for which we have empaneled only 3 medical colleges, tertiary care hospitals, that is IGMC Shimla, Dr. RPGMC Kangra at Tanda, and also the PGI Chandigarh. The PGI Chandigarh is not empaneled in any scheme, so we have made an arrangement and by opening an office at PGI Chandigarh, so people from Himachal Pradesh are visiting to avail the treatment at PGI Chandigarh through our office. And also we are providing cardiac and cardiothoracic surgeries, genitourinary surgery, neurosurgery, radiation oncology, trauma, transplant surgeries, cancer treatment under critical care. In addition to that, under RSVY, the categories are identified by the central government only. There were vulnerable group in Himachal Pradesh like senior citizens above 80 years of age, ekal naris, Anganwadi workers, Anganwadi helpers, midday meal workers, part-time workers, daily wage workers, and also the contract employees of states who were not covered under any health insurance scheme and medical reimbursement scheme. So state of Himachal Pradesh had decided to implement Mukhyamantri State Healthcare Scheme from the last financial year, that is 2014-15, and it is a smart card based scheme and totally 100% funded by the state government, and it is health protection scheme, not health insurance scheme. We have not involved the insurance company to implement this scheme, and we are providing both the cover, that is common ailments 30,000 and also the critical care cover under the scheme. And we have targeted to cover about 1 lakh families under this scheme, and total 93 smart cards have already been issued. The smart card issuance process is on. Unique feature of scheme is that we are issuing the smart card for 5 years. Beneficiary has to renew the card only after 3rd year, and we have decided to collect rupees 30, that is registration charges, only once in a 5 year from beneficiary. There are about 14.83 lakh household families in Himachal Pradesh. As I have already told you that Himachal is a little hilly state, and out of which 4.84 lakh families are covered under RSVY, and 1 lakh families are being covered under Mukhyamantri State Healthcare Scheme, 1.32 lakh are regular government employees, and 1.89 lakh are the regular government employees, 1.32 lakh are the pensioners of state government, and 0.39 lakh are the PSU employees in Himachal Pradesh. So there are about 5.39 lakh families who were not covered under any health insurance scheme or medical reimbursement scheme. So with a view to provide the critical and basic health care to all these remaining families, state of Himachal Pradesh has decided to roll out new scheme, Himachal Pradesh Universal Health Protection Scheme, from the current financial year, and this is the first steps toward the universal health protection. So every individual of Himachal Pradesh will be covered under any of the insurance scheme or medical reimbursement scheme. We will provide the same benefit, that basic and also the critical care coverage under the new scheme, and there will be no family cap in this scheme. And also we are proposing to the state government to increase the coverage of rupees 30,000 to 1 lakh. The common ailments coverage, all the pre-existing diseases will be covered. This scheme will also provide the benefit through smart cards. We will issue a smart card to a family unit of 5, and one unique feature is that this scheme beneficiary will have to pay rupees 1 per day for getting enrollment under the scheme, only 365 rupees in a year. So remaining cost will be borne by the state government. And we will be introducing the permanent enrollment center at district level. The beneficiary can visit any time to get enrolled under the scheme, for which we are planning to hire a support agency, not insurance company, not third party administrator, a support agency, system concern offer TPA, who will be able to complete this work. In addition to above, we are planning, we are under process to design a web-based application. With the help of web-based application, the beneficiary will be able to see their details, that is balance available, treatment taken, etc., and his eligibility criteria through that web-based application at any time. Also, we are designing a mobile based application, mobile app. The beneficiary will be able to see the detail of empaneled hospital through the that application, with the help of that application.
And that's all. Thank you so much. Thank you so much, sir. Since we have a variety of speakers representing different states in family and health and family welfare department, and many of the speakers have long experience working with the department. Now I request Dr. Selva Vinayagam, Additional Director, Government of Tamil Nadu, who is one of the senior most speakers in this panel, to chair this session. And I request, sir, please give 4 to 5 minutes to each speaker and discuss about their best practices and initiatives in their respective states. Over to you, sir. Thank you. Thank you. Dr. Soma, I am the District Family Welfare Officer for UT Chandigarh. Basically, our work that has been focusing on how to make a progress against all the existing resources, whether it is the human resources, whether it is the IEC personnel, whether it is the infrastructure. So what we adopted was a sort of strategic planning cycle. Say for example, in the beginning we did not have a very good data. Say Ministry of Health and Family Welfare wanted some other data to check for the monitorable indicators, MMR, IMR, and this data was not being generated at the ground level. The registers were not available. So we, through the participatory approach with our health workers, like the very dedicated ANMs and LHVs we had in Rajasthan, we had seen them today, we sat together and we reformulated those registers and documentation formats. And within a very short period, we realized that our MCTS enrollments, we were #1 in the country. Within around 6 to 7 months, and the printing of the registers would have taken very, very long period. So the ANMs, and through motivation, through administrative skill, and through the political skill, we took the media also along with us. These workers, they really felt empowered, and they readily were willing to make the new columns entries into the existing register with their own hands. Within 6 to 7 months, when we had the NIC bulletin in 2012 that we are #1 in the country, there was a motivation to these workers. And I got a very, very good administrative skill, and like Mr. Nitin Jain was so positive today, so encouraging. I always had that support back home, and I'm so thankful to the administration in Chandigarh. So we kept on with this data generation. We came to know that with the maternal death reviews, we came to know we have the JSSK facility for an ambulance. The number of the ambulance is written on the MCP card, but the patient is not able to call the ambulance because there is no ambulance. He does not have any telephone at home. So then we started, sort of micro birth planning. Every ANM was supposed to contact the neighbors in the 3 weeks of expected date of delivery, and they did it very, very religiously. And same was for the postnatal care, and they were able to catch hold of few of the very rigid-minded people, say for example, who were not willing to move to the hospital. And then we had a system that first the ANM will contact that family. If the ANM is not able to sort of mobilize that family, then it is the LHV. And my medical officers, they did a wonderful job, sir. In Chandigarh, most of the people, they are deputationists, and they have very, very high connections. It was our myth that the public does not listen to us. It was our myth that the medical officer, a wife of IAS officer, will never go to a slum colony. But to my surprise, with the good motivation, good leadership and mentoring, these doctors, they lifted the newborns in their own cars, wrapped in their own shawls, and they lifted them to the hospital, sir. And beyond that, now we have been doing very, very good, sort of progress. The maternal mortality ratio, we were able to reduce from 18 to 9. Chandigarh is a very, very small city. Within 1 year, sir. That was again a motivation for us. But however, we achieved stillbirth ratio rate, the minimal in the country, to the 16. And this has been a publication in the Lancet. So this is like a third-party assessment.
Maternal mortality ratio is based upon the absolute number. Since we are not covered by the annual health survey, we are not covered by the DLHs. However, SRS has been very, very discouraging for us. It has been clubbed for 3 years. 3 years means 2013, 14 and 15. And in the last SRS, we were at IMR 19. From 19, we jumped to 21, and now it is 23. But surprising, the female sex ratio जो है, female deaths after first 1 month of their life, that has gone alarmingly very, very high, 27. So we need to know what is it that has gone wrong after the perinatal, prenatal and the perinatal area. So this is the reason why we are we call this a social networking program. We call this a good mission convergence. We call this a behavior change communication. Now we have entered step 2, sir. That is like in every, because this has become a A&M centered program, and A&Ms have to work very, very hard for all the expanding programs. So I had to think about the phase 2. That phase 2 is that in every lane or mohalla, for around 600 population, 1000 population, we have identified a group of, advocates, whatever way they can contribute. These are the additional session judges also who are working in the mohallas of UT Chandigarh. That is a beauty in the this thing. Mayors, councillors, they are all together with us. My objective is that they will be working as the community vigilance team at the community level. They will be giving us the warning signals. They will be giving us the warning signals. Say, for example, there is a pipe broken, and this pipe broken, they will directly get in touch with the engineering department, the junior engineer, or the law department in case there is some domestic violence. And say, for example, if there is a drug addict, they will come up during the discussion with the health department that uska husband to sharabi hai, wo bechari kya karegi, hospital nahi aayegi. So we will be liaising with the Alcoholic Anonymous group. So this is a preliminary information and a warning signal every week, every month, which will be coming. Now I am very lucky that I am today attending this workshop here, this summit. Mr. NHSRC person, what was his name? Jitendra Sharma, he gave a very, very good, clue to us, the predictive analysis. So now this community vigilant or the community detectives, what information they will be giving us, we will be utilizing it for the e-health and the e-program production or starting it in a very, very positive manner. And I feel we had the results very fast for the maternal health and the child health. And for the e-health also, we'll be very, very happy and fast to implement it in UT Chandigarh, sir. Thank you very much. And our basic agenda is, on the top priority is, I've been looking after RMNCH plus say for the past 7 years. I've handed it over to the next officer. My agenda is now NCT and this NVBDCP, because that is a very, very crucial issue for UT Chandigarh. And third is the geriatric mental health care, because most of our population, we have a very good high GDP, sir. Per capita income, education rate is very high. People are working, the youngsters, they are away to US or to Bangalore, and the couples, old couples, they are staying alone. So there are mental health issues there, so we'll be using for this geriatric health care, the eyes, psyche, e-health and all that. So that is it from my side. Thank you very much. Yeah. Thank you, Dr. Soma. You have just touched upon MCTS converging with ambulance, ultimately reducing MMR and neonatal. Thank you, and we wish you for the new assignments. Maybe now I request Dr. Sashikant, Director NHM, to say. Good evening, everybody. The new initiative that we have taken up in Punjab is the health kiosk. That health kiosk is, we are setting up health kiosks in areas which are not officially declared as slums. They're just temporary slums where construction workers are there, or maybe just a beggar's colony or something which is not otherwise officially declared as a slum. Now this, in such places we have shortage of land also, which cannot be assigned or cannot be registered in the name of the health department.
So we put up prefabricated structures. It's a single room, approximately about 15 feet by 10 feet is the size, and it is being manned by a A&M. The A&M basically is giving only the primary health care over there. She is doing the same work as she has to do in a rural area in a sub-center. The timings for these health kiosks, we've kept them in a way so that the industrial workers or even the other workers, construction workers also, they can, take benefit from the presence of the A&M over there. So in summers, we've kept it as from 1 p.m. to 7 p.m. and in winters it is from 12 to 6. Then we're providing all the antenatal care to the pregnant lady, the motivation for institutional deliveries, the immunization, and basic medicines like maybe albendazole, the iron folic acid, paracetamol, that's all. Thank you, Dr. Shashikant. It's a good thing he is in a position to create an health kiosk with a short period of time in a free fabricated material with the flexi timings. It's a good thing, sir. Thank you. And now I request Dr. Jitendra. Esteemed panelists on the dais and friends from across the country, a very good evening to you. I thank the state of Rajasthan on behalf of my government for giving me this opportunity to be here, be with you people. As I have only 4 to 5 minutes of time, I'll try to stick to that. Ladies and gentlemen, I come from a part of the country about which you know very well. We have a lot of beautiful places, very good places and very famous shrines, and all of which you all adore. But with all this, we have our own problems and we have to find solutions as per our own problems. When we decided seriously to streamline the ASHA program in our state, we identified the problems we have. Our first problem was that it was year 2013 and we did not have a definite structure, and we were out of permissibility of 12,000 ASHAs for our state, we were deficient of 3,000 ASHAs. So huge population was not covered by the ASHA program. Second problem was that we have extremes of geography, climate and temperature and terrains. Like we have Himalayas, we have plains and minus 40 temperature at places, plus 48 temperature, like that. And the third problem was we have 4 different major languages. One region cannot understand or speak the language of the other region. Like Ladakhi it cannot be understood by Kashmiri, Kashmiri cannot be understood by Dogri. So Rajori Punch wale wo alag hi bhasha bolte hain. This is apart from 2 or 3 more languages we have. So we were late. As per community process guidelines, it would take us a lot of time to recruit people and to train them in those 7 rounds, which they were essentially to be trained for working. And we had to have some local solution. A person who could live in that geographic condition, speak that language. These were the basic important considerations. So what we did, instead of taking people on contractual basis or with some other means and mechanism, we had already very senior people like community health officers, block extension educators, lady health visitors, maybe female multipurpose workers, some pharmacists, who were in the system since long, 18 to 20, 25 years of service. And there were those departments, there were those manpower with the permanent health department who were involved with national health programs when this IT was not there, when those conditions were there which we have privileges today, so many privileges which were not there. And they were already involved in eradication of smallpox, polio, like that in those times.
So they were we found them a useful asset which had taken a back seat because of NRHM, because they were not computer savvy because of their age, and they were permanent employees. They also have the attitude. What we did, we first created them as training cadres. We trained them in 7 rounds, gave orientation to them of Government of India guidelines, relevant government orders which were required. And then we created an executive cadre out of that, the senior most, based on few criteria which we framed. We placed him as district ASHA coordinator, and the junior one was placed as block ASHA coordinator. And another thing which we did was, we did not take ASHA facilitators among the best ASHAs, as is done in the rest of the country. What we did, out of the middle of the cluster, we took the A&M and we made A&M the ASHA facilitator, because we thought that if we take best ASHA as ASHA facilitator, she is still an ASHA. She has to work with A&M, say in a cluster, in an area of 10 to 20 villages, there would be 4 to 6 A&Ms whom she would have to work, the ASHA facilitator, and around 20 to 30 Anganwadi workers, and they would not listen to her because she is just an ASHA, an 8th or 10th class pass lady. And nurse has a better chance of being an ASHA facilitator because she treats the community. She has some positional power with her. This is how we created this structure, and it really worked nice for us, as it was experienced cadre, already trained cadre, and was local cadre, was knowing that if we would put somebody from outside in that region, it would be difficult for him. And now the scene, kind of scene we are having in our state, you are hearing every day. These are the cadres which are helpful to us now. The telephone is not working since so many days, internet is not working. They are managing the show in spite of all the disturbances we keep on facing. And this is an economical cadre, because they already take the salary, we just pay them 600 to the facilitator, 1800 to the block ASHA coordinator, 3000 to the district ASHA coordinator. So it is economical, we save a lot of money also out of this model. Attrition rate is less. The district ASHA coordinator retires or goes away, the best block ASHA coordinator replaces him or her. Similarly, the ASHA facilitator replaces. So there is a career progression pathway also, which is created. All CHOs are not district in charges. All block extension educators or the other cadres are not block in charges. So they have that prestige issue now also. They stand out and they perform better. This is what we have done for institutionalization of ASHA cadres in our state. Thank you, ladies and gentlemen. Thank you, Dr. Jitendra. The nice way of coming out of this shortage of ASHA, you are able to do it and re-employ them with the orientation. Thank you. And the concept of A&M as a facilitator is also good, sir. Now I'll request Dr. Tirupati from MP. I am really thankful to Government of Rajasthan to have this opportunity to me being on the dais. ये मध्य प्रदेश के अंदर जो नवाचार हुए हैं या जो नवाचार हो रहे हैं उनके बारे में मैं थोड़ा सा, समय कम है इसलिए जल्दी जल्दी ब्रीफ करना चाहूँगा। एक तो जितने हमारे यहाँ क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए एक सिस्टम डेवलप कर दिया गया है और वो टाइम बाउंड है, इसको स्वास्थ्य गारंटी के अंदर रखा गया है। कोल्ड चेन टेम्परेचर मॉनिटरिंग इन वैक्सीन स्टॉक मैनेजमेंट, ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम विद द हेल्प ऑफ मोबाइल ऑल्सो। तीसरा हमारा जो एक नवाचार चल रहा है वो महिला स्वास्थ्य शिविर है। महिला पूरे प्रदेश में महिला स्वास्थ्य शिविर में प्राइमरी हेल्थ केयर से लेकर टर्सरी केयर तक के लिए महिला स्वास्थ्य शिविर में राइट फ्रॉम दी सब सेंटर लेवल अप टू दी मेडिकल कॉलेजेस रेफरल की व्यवस्था की गई है। यह जिन डिजीज़ का मेडिकल कॉलेज में नहीं है उनमें एक्रेडिटेड हॉस्पिटल में करने की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट है कीमोथेरेपी। हमारे यहाँ वी ट्रेंड मेडिकल ऑफिसर्स और एमडी इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स फॉर द कैंसर पेशेंट्स कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट। वो जो कैंसर में फर्स्ट कीमो लेके आते हैं कैंसर हॉस्पिटल से, देन वो जो रिजिम प्रिस्क्राइब कर देते हैं उसको यहाँ फॉलो करते हैं डिस्ट्रिक्ट्स में। We have installed dialysis machines in every district
और रिसेंटली ये डिसीजन लिया गया है कि सारे जिला चिकित्सालय में सीटी स्कैन मशीन लगा दी जाए। इसके अलावा सारे जो एक ई मॉनिटरिंग के लिए 12 सॉफ्टवेयर का एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया हुआ है, जिसपे FIMS, आपका HIMS और जितने इक्विपमेंट्स हैं, एवरीथिंग इज ऑन दीज 12 सॉफ्टवेयर्स। जहाँ तक बीमा योजनाओं का सवाल है, हमारे यहाँ 12-13 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की गई थी और ये इफ्को टोक्यो करके इंश्योरेंस कंपनी ने इसको किया था और आपस में कुछ विवाद होने के कारण अभी हमारे यहाँ क्रियाशील नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ मुख्यमंत्री महोदय की योजनाएं बहुत पहले से लागू हैं जो अभी भी चल रही हैं। एक है दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना, जिसमें BPL गरीबी में जीवन यापन करने वाले हितग्राहियों को 30,000 रुपये तक का भर्ती, शासकीय अस्पताल में भर्ती होने पर 30,000 रुपये तक की दवाएं और उनके जांचें मुफ्त की जाती हैं। दूसरा है राज्य बीमारी सहायता निधि, इसमें 25,000 से लेके अप टू 2 लाख और इसमें 21 आइडेंटिफाइड डिजीजेज हैं। 20 डिजीजेज पहले से चल रही थी और अभी 21वीं नई डिजीज इनफर्टिलिटी उसमें इंक्लूड की गई है। फिर है मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना, इसमें अभी रिसेंटली रिवाइज किया गया है इसको। इसमें 2 लाख तक का पैकेज दिया गया है। 0 से 18 साल तक के बच्चे, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हों, चाहे BPL हो चाहे APL हो, सभी को ये इसमें मदद दी जाती है। और तीसरा है मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना, इसमें 0 से 7 ईयर्स तक के बच्चों को 6.5 लाख का पैकेज है, ये दिया जाता है। थैंक यू। Thank you, Dr. Tripathi. You have critically touched upon the critical things like Clinical Establishment Act and training the medical officers in oncology. It's a good initiation. Thank you, sir. Now I request Dr. Monica. I'm from UP and I'll talk about Sampurna project. Sampurna project basically हमने cervical cancer की स्क्रीनिंग और प्री कैंसरस लीजन को ट्रीट करने के लिए स्टार्ट किया था। बट बिकॉज सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग होती है नॉर्मल पेशेंट्स में हु डू नॉट परसीव एनी सिम्टम्स, तो उनको अचानक से बता देना कि आपको सर्वाइकल कैंसर के लिए आप हाई रिस्क हो और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट होना है, तो ये थोड़ा सा स्टिग्मा भी है हमारे सोसाइटी में। देन वी मेड इट अ कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज। कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज में हमने डायबिटीज, हाइपरटेंशन, अनीमिया, ओबेसिटी, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, ये सब कुछ ऐड कर दिया और इस कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज को हम सबकी स्क्रीनिंग करते हैं एंड अकॉर्डिंगली द विमेन हु आर फाउंड पॉजिटिव, उनका काउंसलिंग, ट्रीटमेंट, मैनेजमेंट, रेफरल एंड फॉलोअप वॉट एवर इज रिक्वायर्ड विच इज डन। संपूर्ण प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के लिए जिलों में 3 लोकेशंस पर संपूर्ण क्लिनिक स्टैब्लिश की गई है। अभी तक हम 28 डिस्ट्रिक्ट्स में जा चुके हैं और हर डिस्ट्रिक्ट्स में एक डिस्ट्रिक्ट वीमेन हॉस्पिटल और 2 CHCs, 2 सिलेक्टेड CHCs में संपूर्ण क्लिनिक स्टैब्लिश की गई है। डिस्ट्रिक्ट वीमेन हॉस्पिटल हमने इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि महिलाओं के लिए ऑलरेडी NCD क्लिनिक ऑलरेडी हमारा दूसरे हॉस्पिटल में स्टैब्लिश है, पर वहाँ पर महिलाओं को प्राइवेसी और दूसरे इश्यूज का प्रॉब्लम आता है। डिस्ट्रिक्ट वीमेन हॉस्पिटल में सारी महिलाओं का ट्रीटमेंट करती हैं या स्क्रीनिंग करती हैं, सो दैट गिव्स देम अटमोस्ट प्राइवेसी एंड बिलोंगिंगनेस। और इन क्लिनिक्स को चलाने के लिए हमने उनको स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स एंड एवरीथिंग व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड हमने उनको दिया हुआ है। इस प्रोग्राम के इम्प्लीमेंटेशन के लिए स्टेट लेवल पर 3 ऑर्गेनाइजेशंस का MOU हुआ था, NHM, सिफ्सा एंड PSI। NHM से फंड हमारे पास आता है, PSI टेक्निकल सपोर्ट के लिए एंड सिफ्सा सपोर्ट्स इन इम्प्लीमेंटेशन। सो इनिशियली प्रोजेक्ट को हमने 5 डिस्ट्रिक्ट्स में रोल आउट किया था, पर अब वो 28 डिस्ट्रिक्ट्स में चल रहा है। बट और यहाँ इसमें सर्वाइकल कैंसर का स्क्रीनिंग हम WHO अप्रूव टेक्निक VIA और क्रायोथेरेपी से करते हैं। VIA मीन्स विजुअल इंस्पेक्शन विद एसिटिक एसिड,
जो कि 1 मिनट में वो टेस्ट हो जाता है, और उसके बाद अगर कोई महिला पॉजिटिव पाई जाती है तो उसको वहीं का वहीं क्रायोथेरेपी दे करके तब भेजा जाता है। बहुत सारी चीज़ें इसमें और भी हैं सपोर्ट के लिए, जैसे संपूर्ण कार्ड दिया जाता है, क्लिनिक में रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास रिपोर्ट्स हैं, एंड काउंसलिंग की जाती है। डायबिटीज़ जो पेशेंट्स, जो महिलाएं प्री डायबिटिक या प्री हाइपरटेंसिव रेंज में पाई जाती हैं, उनको लाइफस्टाइल मैनेजमेंट काउंसलिंग दिया जाता है, उसके लिए एजुकेशन मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाता है, और एनीमिक महिलाओं को उस तरह का काउंसलिंग दिया जाता है। एंड जो लॉन्ग टर्म गोल हमको इस प्रोजेक्ट से अचीव करना है, विच इज़ वी थिंक दैट वीमेन आर पाइवट ऑफ द फैमिली। सो अगर हम उनको लाइफस्टाइल मैनेजमेंट काउंसलिंग और उनकी हेल्थ के लिए चेकअप, और अगर उनको हम इंफॉर्मेशन देंगे, उनको जागरूक करेंगे, तो कहीं ना कहीं पूरा इफेक्ट उनकी फैमिली पर आएगा। एंड बिकॉज द फैमिली इज द यूनिट ऑफ कम्युनिटी, तो पूरी कम्युनिटी को हम स्वस्थ बना पाएंगे। एंड द ओवरऑल हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस पर हो रहा है, विच आर क्रॉनिक डिजीजेस, वो हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर भी कम कर पाएंगे। बट देयर आर सर्टेन चैलेंजेस ऑल्सो। सबसे पहला चैलेंज तो हमारे लिए ये था कि जो MNH प्रायोरिटीज़ हैं सब जगह पर, मैटरनल न्यूबॉर्न हेल्थ, हमारे हॉस्पिटल्स में, हमारे डिस्ट्रिक्ट्स पर, हमारे ऑफिशियल्स के लिए, रिव्यू के लिए, उसमें इस तरह के प्रोजेक्ट्स का स्पेस बना पाना। देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स व्हाट वी डू डिफरेंट इन दिस प्रोजेक्ट इज, पहली बात तो NCD और कैंसर्स पर हम बात करते हैं, और सेकेंडली हम क्योरेटिव मेडिसिन या जब प्रॉब्लम है उस समय ट्रीटमेंट के बजाय हम नॉर्मल एसिम्प्टोमेटिक महिलाओं को भी जांच कराने के लिए बोलते हैं, जो एक्सेप्ट जनरली जल्दी नहीं होता। महिलाएं बोलती नहीं हम तो बिल्कुल ठीक हैं, हम क्यों करें, बट स्टिल वी आर डूइंग इट एंड वी आर डूइंग इट सक्सेसफुली। सो दैट वाज द वन चैलेंज। एंड द सेकंड चैलेंज इज डर्ट ऑफ डॉक्टर्स। जब हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया था 5 डिस्ट्रिक्ट्स में, तो वी गेव डेडिकेटेड स्टाफ फॉर दिस, जिससे कि उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा था। जब हम 28 डिस्ट्रिक्ट्स में एक्सपैंड किया, तो उसमें जो डॉक्टर्स या जो स्टाफ अवेलेबल है उसी के थ्रू गए, तो वहाँ पर हमें दिक्कतें थोड़ी सी ज़्यादा आती हैं, बिकॉज दे आर ऑलरेडी इन्वॉल्व इन अदर प्रोग्राम्स एंड अदर प्रायोरिटीज। सो तीसरा कुछ टेक्नोलॉजिकल चीज़ें भी हैं, जैसे कि जब हम क्रायोथेरेपी पर आते हैं, तो क्रायोथेरेपी जो क्रायोगन है इक्विपमेंट, वो इंडिया में सिर्फ एक ही कंपनी बनाती है। तो उसमें, और जब उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, कभी कभी उसका गैस लीक होता है, कभी कुछ प्रॉब्लम होता है, तो उसका जो आफ्टर सेल्स सर्विसेज है, वी डिडंट फाउंड इट वेरी गुड। उसका दूसरा ऑप्शन भी वी आर फाइंडिंग आउट द अदर ऑप्शंस ऑल्सो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें फंड भी दिया है, बट उसमें थोड़ा सा कुछ दिक्कतें आ रही हैं। देन क्रायोथेरेपी के लिए हमको नाइट्रस ऑक्साइड गैस चाहिए होती है। नाइट्रस ऑक्साइड गैस यूपी में 3 प्लांट्स हैं वो बनाते हैं, और बाकी जगह पर वो सप्लाई होता है थ्रू डिफरेंट चैनल्स। हर जगह पर उसका रेट और उसका जो सप्लाई है उसका मैकेनिज्म डिफरेंट है। तो इसको, ये सारे प्रोसेसेस को एक जगह पर लाना, उनका सप्लाईज मैनेज करना, अनइंटरप्टेड सप्लाई दे पाना, ये चीज़ें थोड़ा सा हमारे लिए चैलेंज है, बट स्टिल द प्रोजेक्ट इज डूइंग वेल। हमने अभी तक बहुत सारी महिलाओं को स्क्रीन किया है, एंड द फर्दर प्लान्स आर कि हम आशा, ANM, जो भी हमारे 30 से 60 साल की एज ग्रुप में आते हैं, जो हमारे इस क्लिनिक के लिए एज ग्रुप है, उनको हम पहले स्क्रीन करेंगे, जिससे कि दे बिकम आवर चेंज एजेंट, और वो गांव-गांव की हर महिला को ला करके इस तरह का स्क्रीनिंग करवा सकें, एटलीस्ट उनमें एक इन्फॉर्मेशन दे सकें कि इस तरह का प्रोग्राम भी है। सो थैंक यू सो मच। Thank you, Rajasthan and Elites, to give us the opportunity to share our pioneers and innovation in Gujarat. As we all know, Gujarat is pioneer in many of the innovations. So I brief some of the innovation which had done in Gujarat successfully, and it is replicated in across the country as well as in many of the state. One of them is a mother and child tracking system, which is we called as e-Mamta, through which we are able to supervise and monitor our RCH activity. And second one is drug and logistic inventory management system, dealings which we have implemented in 2004. Then third one is Chiranjeevi scheme, which is one of the best scheme across the country and started in 2000. It is a PPP scheme
for pregnant lady. Then Mukhyamantri Amrutam assurance scheme for tertiary care, benefit to the BPL as well as lower middle class families. I just narrate the name of the scheme, and I request all of you, you come to the Gujarat and see whatever we have implemented in the field, and then you suggest us to improve what we can do better. Third is GPS positioning for government ambulance, not for 108. 108 is doing GPS positioning from their side, but for government ambulance and for mobile medical unit, we are utilizing that GPS positioning system. Then we have implemented an online disability certificate mechanism across the state. Our PHC, our CHC, and our district hospital is issuing that certificate through online. Anyone, any disabled person can avail that service through online mechanism. They can register their disability to this portal, and PHC medical officer can issue a certain limit disability certificate to the beneficiary. Also, Gujarat is a pioneer in IDSP, which is now implemented across the state. Even just like you, Uttar Pradesh, we are implementing diabetes, hypertension, breast and cervical screening program since last 2 years. Across the state, we are implementing that scheme. Also, a Khil Khilat, a drop back facility for pregnant woman and child, mother and child, a drop back facility. It is implemented since 2 years. And last but not least, our CM has announced a drop back facility for dead body. After that incident which happened in Odisha, and our CM is already announced that scheme for drop back facility, and we are implementing this scheme within 1 month or 2 months. We are implementing this, that scheme, drop back facility. So that is many of the innovations which Gujarat had already. Okay. Thank you. Yeah. Thanks, Dr. Nitesh. Thanks for challenging MCT tracking, drug logistics, GPS posting, particularly on the government vehicles. It's really a good thing. And online certification of disability is really a welcome one. Thank you. And now I request Dr. Sumit to share that. Well, on 15th of August 2005, since the topic is actually innovation in healthcare, so I'll stick to that actually. On 15th of August 2005, we started with an innovation named 108. Now, it's been 11 years actually with this innovation of 108, and we started, I would say, in Andhra Pradesh with this innovation. And currently we are operating this services in 15 states and 2 union territories. We are somewhere serving some 26,000 emergencies per day. The ambulance count across India is somewhere around 10,600. So it's been an 11 years journey with this innovation, but now I'll come to Rajasthan specifically. Because in Rajasthan, there is something unique that has happened, an innovation under the able leadership of Naveen sir. We have been working very closely with Naveen sir for the past 2 years, and just 3 months back, precisely 3 months, I would say on 23rd June 2016, we signed a contract of integrated ambulance services. Now, government of Rajasthan was of the view that 108 is okay, it is running in its own isolation. 104 services are there, like you have Kilkilat, here we have 104 dropback services. Then there is some medical advice going on. People can call at 104 and get the medical advice as well. And the unique part of this integrated ambulance service was, tomorrow, let's say it's not an emergency and I need an ambulance. Let's say my grandfather wants to visit to a marriage, and he is sick, he cannot go in a vehicle, he needs ambulance.
Now, that particular facility, I don't think any of the state is operating currently. So, government of Rajasthan gave us 200 ambulances to operate on paid basis. People can call at 104 or 108 and they can get that particular service, that paid ambulance service. Now that was the unique, USP of this particular integrated ambulance project. Integrating all the 4 services, the 108, the 104 dropback, the 104 medical helpline, plus the base ambulance on paid basis. By integrating all these 4 ambulances, government of Rajasthan has actually come up with a unique innovation of Jeevan Vahini. This service is now being branded as Jeevan Vahini. And I'm sure with such an initiative or with such an innovation taking place in Rajasthan, other states are also going to fall in line once they actually see the repercussions of this particular, the implementation of this particular project. So I'm going to be very short because we are running out of time. So I just wanted to thank ELET plus Government of Rajasthan for giving us an opportunity to actually connect with you all. Thank you so much. Thanks, Datta. The 108 itself is an innovation. Now the integration started, and the paid ambulance is really on the good direction to go ahead. Thank you. And now I request Dr. Priya Ranjan from eCyclinic. Thank you, sir. And I thank the organizers to give us this opportunity. I don't represent any of the states. I represent basically all over India, and basically it's a global thing. So since we are not having any physical presence, it's an online portal that I represent, eCyclinic. And what was so surprising, there were almost 8 of us panelists. None of us have, they all are doing innovative work, but none of it concerns mental illness or mental health. That's so surprising. WHO predicts by 2020, you have covered, briefly, sorry, ma'am. So by 2020, depression is going to be the second biggest cause of morbidity, and among the top 10 diseases, there are other mental illnesses that is going to come. But somehow we get this step-brotherly treatment from the other Department of Medicine for reasons unknown. But basically, what we had in our mind 1 year back, almost 1 year back when we started this online portal, was that there's a huge scarcity of trained mental health professionals. Psychiatrists, there are less than 4,000 in a country as huge as India. Psychologists, which is another mental health professional, they are less than 1,000. And there are psychiatric social workers, psychiatric nurses, they can be counted on fingers. So, and such a huge country, so much of morbidity. Where will these people go when they seek treatment, when they seek any kind of help? Most of the psychiatrists are concentrated in the big metros or the bigger cities. NMHP, DMHP, in most of the states are not doing really well. I don't know about Rajasthan, but I know about some other states. There are less than 1/3 or 1/5 of districts only have psychiatrists. So to bridge this gap, this huge gap of the people who need the psychiatric help and the psychiatrist or the mental health professional, we came with this innovative technology where we actually made a team, highly trained. Most of them are trained from the most reputed institutes of India in different mental health streams, psychiatry, psychology, and etc. And we formed a group. And we thought that whether it's going to work or not. We were a little skeptical since it was a startup. We hardly had any finances. But surprisingly, within a month, we started getting patients. We did not do any promotion because we did not have any money for that. What we used was the social media and our constant work. Like we used to write articles, we used to give self-help techniques, share it on our Facebook and other social media platforms. And within a month, slowly it started generating response, awareness, and now it's almost 1 year, and we have more than 1 million actually visitors of our site.
which is an enormous number for a 1-year-old startup. So what we were thinking, and most of these people are actually getting excellent result. We have some of the skeptics used to say that what you are doing is actually an online thing and only the metros and the bigger cities. What you are actually implying, you were trying to bridge the gap, but the gap is still there because the online medium is mostly accessible to the people from the bigger cities. But that's not the case anymore nowadays in India. And then we again came, okay, fine, that's a fair logic, fair argument. So we came and we tied up with BSNL, and we are also in the process of tying up with other mobile service providers, where somebody sitting in any part of India, if he feels, or he or she feels that he has some issues that he would like to actually discuss with a professional, he can just call up on those numbers that we have, and the charges, it is fully charged. The whole service is a commercial service, so we charge money for that. So the charges will be deducted from the balance if it's a prepaid card, or from postpaid, then it will be incurred in the next bill. So similarly, we are doing a lot of innovations, and we are under the process of doing that. Till now, we are only working in the on an independent basis. But this is the first time that we actually came and attended a summit which is being organized by the government machinery, and we hope to actually tie up and with various state government agencies and various health missions and programs, so that we can provide this facility to the largest population of our country. Thank you very much. Thank you, Dr. Priyaranjan. It's a good thing that you're trying to address a mental health issue, which is really an emerging problem. The good part is you're trying to do it online, and promoting it through social media, definitely a welcome step. We wish you the best thing, sir. Now, maybe finally, I'd like to say a few words on the things which are happening in the state which I represent. I am from Tamil Nadu. We have so many innovations. For example, we run our CM insurance scheme, which we are running it for more than 8 years now, covering around 3.5 crore families. And it has got all the modules of identification with a smart card, patient redressal, and everything. And we have a monitoring through an HIMS, which we are running it since 2005 with the TCS as a partner. And we have analytical model, which we call it State Health Data Resource Center, which we do it with Accenture. That's also going on now. And we have a separate recruitment agency for recruiting all the manpower through a medical recruitment board with the skill training labs. And we do the NCD screening since 2012. Maybe we have done around, for cancer cervix itself, around 2 crore women we have screened. We link it with all the treatments and follow-up, including diagnostic services we provide. And we also in the process of doing an UHC pilot in some of the districts. And to say as an innovation here, we say we all established a district public health laboratory under a IDSP program. Most of the states have done it. We have expanded it to all the districts. Right now, this district public health laboratories are not only in the process of helping out in outbreak investigations. Now they are in the process of in the predictive, in the way in which they can predict the occurrence of the epidemic. This mainly through an integration with the existing IP load, sentinel surveillance, data from the water lab, data from the food lab. Through this, we are in the process of identification or even predicting the emergence of the diseases, particularly things like dengue, which is the real issue right now. And also, we are in the process of identifying the dengue virus in the parasite itself, in the vector itself, in the mosquito itself. Rather than we are trying to identify in the process after the disease has occurred, through an entomological survey, we are planning to do it, the occurrence or the identification of the dengue virus in the mosquito through entomology. This is the innovations which are trying to do it. Maybe with a shortage of time, I'll stop here. Thank you. Mike, udhar hai mic. गुड इवनिंग। ये संपूर्ण प्रोजेक्ट है मैडम, तो आपके यहाँ पे कितने टेस्ट हुए हैं सर्वाइकल के, और माने के टेस्ट हुए हैं तो उसका आपने ट्रीटमेंट को लेके क्या प्रोसेसेस किए? मान लीजिए कि 2000 लोग आ गए पॉजिटिव, तो यूपी गवर्नमेंट ने किस तरह से सोचा है कि इसको किस तरह से ट्रीट किया जाएगा?
क्योंकि इसका अभी तक प्रेवलेंस का जो है वो पूरी तरह से अगर यूपी को किया जाए, क्या यूपी गवर्नमेंट उस लेवल पे है, या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट अगर इसको एज अ स्ट्रेटजी यूज़ करे स्क्रीनिंग की, तो क्या वो गवर्नमेंट के लिए क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए? आपने कुछ इस पर थॉट्स किए हो? पूरे सर्वाइकल कैंसर के लिए देयर शुड बी 3 स्ट्रेटजीज। एक तो उन पेशेंट्स के लिए जो अभी सर्वाइकल कैंसर के पेशेंट्स हैं, उनको ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, जो कि हमारे टर्शरी सेंटर्स जो हैं वहाँ पर मिल सकता है, जैसे कि मेडिकल कॉलेजेस हैं या और भी दूसरे टर्शरी केयर सेंटर्स हैं। सेकेंड, हम 30 to 60 ईयर्स की जो महिलाएं हैं उनको स्क्रीन करते हैं, उसमें से अगर कोई प्री कैंसरस लीजन जिसमें मिलता है उसको हम देन एंड देयर वहीं पर ट्रीटमेंट दे देते हैं क्रायोथेरेपी से। बट देयर ये हमारी टेक्नोलॉजी है जो WHO अप्रूव टेक्नोलॉजी है, VIA एंड क्रायोथेरेपी। देयर आर अदर टेक्नोलॉजीज फॉर स्क्रीनिंग ऑल्सो सच एज पैप स्मीयर, एंड देयर आर सम मोर कमिंग न्यू टेक्नोलॉजीज, जैसे कि HPV है, केयर HPV जो किट से टेस्ट हो सकता है। तो और इसके बाद फिर आता है वैक्सीनेशन, जो कि अभी हमारे यहाँ कंट्री में शायद तमिलनाडु ने स्टार्ट किया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सो तमिलनाडु एंड सिक्किम। सो मे बी व्हेन वी गेट रिजल्ट्स फ्रॉम देयर वी कैन स्टार्ट, वो प्राइमोडियल प्रिवेंशन की तरीके से एक्ट कर सकता है। सो ये 3 तरीकों से हम पूरे उसको सर्वाइकल कैंसर का जो भी इंसिडेंस है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल तो आई अंडरस्टैंड, बट जो लोड एक साथ आ जाएगा स्क्रीनिंग करने पे, माने कि जो प्रिवेलेंस रेट 5% है, क्या हम आज की तारीख में कोई भी सरकार उसको एग्जैक्टली मैं हमारे क्लिनिक्स में एक दिन में, क्योंकि हम बहुत सारे प्रोसीजर्स करते हैं, अनीमिया, हीमोग्लोबिन भी, वो ग्लूकोमीटर से हम डायबिटीज RBS करते हैं, ब्लड प्रेशर भी चेक होता है, हाइट वेट भी मेजर होता है, क्योंकि कार्डियोवैस्कुलर का भी हाई रिस्क पता करते हैं। तो एक मरीज का लगभग हमको आधा घंटा या उससे थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है क्लिनिक पे सारे इन्वेस्टिगेशन करने में। और अगर हम पूरा दिन देखते हैं क्लिनिक में, तो मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक, सुबह 8 बजे से 2-2:30 बजे तक, जब तक ये क्लिनिक खुलता है, तो मैक्सिमम 30 क्लाइंट्स का स्क्रीनिंग हो पाता है। और वो हमारी पॉपुलेशन के लिए इट इज वेरी लेस। और अगर एक डिस्ट्रिक्ट में हमारे 3 क्लिनिक्स भी हैं, 3 क्लिनिक्स में भी हम डिस्ट्रिक्ट वुमेन हॉस्पिटल का तो रोज OPD स्टार्ट होता है, जो CHC वाले क्लिनिक्स हैं वो हफ्ते में 1 दिन चलते हैं, तो ये कुछ भी नहीं है। और अगर हम अपने सारे हॉस्पिटल में भी स्टार्ट कर दें, पहली बात तो VIA और क्रायोथेरेपी करने के लिए हमको फैसिलिटी लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो हम हर जगह पर नहीं मिल सकता। प्लस हमको डॉक्टर्स चाहिए। VIA हो सकता है कि हम स्टाफ नर्स और आयुष डॉक्टर्स को बहुत अच्छा ट्रेन करें तो वो कर पाए, पर क्रायोथेरेपी वो नहीं कर सकते। क्रायोथेरेपी के लिए वी नीड डॉक्टर्स। तो वी शुड गो टू द प्राइवेट सेक्टर, PPP प्रोजेक्ट की तरह इसको जाना चाहिए। वी वांटेड टू गो ऑल्सो, हमने सारी मोडालिटीज डिसाइड कर ली थी, बट उसमें वेरिफिकेशन हम कैसे करें? जिसका VIA हुआ, हम कोई पिक्चर तो खींचते नहीं, हमको कैसे पता चलेगा कि VIA डॉक्टर ने किया, या जो सर सुबह बोल रहे थे कि हमारी साइकी भी ऐसी है थोड़ी सी, हम इस तरह की चीजें करते हैं। तो ये थोड़ा सा हमको डिफिकल्टी आई कि हम उसको पेमेंट किस बेसिस पर करेंगे। एज सुन एज वी फाइंड आउट द मोडालिटी, हम PPP मोड पे चले जाएंगे। बाकी सारी चीजें हम ऑलरेडी प्लान कर चुके हैं। सो दैट मे बी द वन सॉल्यूशन। Permit, I'll add up. So in Tamil Nadu, we run this cancer cervix screening since 2007 using a World Bank assistance, a separate project. See, with our experience of screening around 2 crore population, the first level, the prevalence is around 1.32%, the first level. But when it goes to the next level for a confirmation through colposcopy, and at various stages it is getting lost, finally it could be not less than something around 10% is only turned out to be a clinical case of cancer cervix. But we linked in such a way that most of the treatments were provided through our CM insurance scheme, where both medical oncology, surgical oncology and radiological treatment is available. But critical part is that you need to have a dedicated staff nurse. That's a critical part in this program. In fact, we have around 2,500 dedicated NCD staff nurse who do this program. Even with this, there's a missing follow-up many times. Yes. So एक चीज मैं और ऐड करना चाहती हूँ कि अगर हम अवेयरनेस बढ़ा दें, तो जरूरी नहीं है कि हम ही किसी को ट्रीट करें थ्रू PPP और थ्रू गवर्नमेंट सेक्टर, वो कहीं भी जाकर के अपना स्क्रीनिंग करवा सकती है। सो ह्यूज अवेयरनेस कैंपेन्स शुड बी डन, IC शुड बी डन। महिला को कहीं से भी इंफॉर्मेशन होगी तो वो कहीं ना कहीं तो उसको ट्रीटमेंट मिल जाएगा। दूसरा मैं एक ऐड करना चाहूँगा, जैसे आपने बताया कि जैसे स्क्रीनिंग हो गया, लोड आ जाएगा आपके पास ट्रीटमेंट के लिए, तो गुजरात में उसके लिए एक मुख्यमंत्री अमृतम स्कीम है,
जिसके तहत हमने मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी सारे एमपैनल किया हो. 120 हॉस्पिटल्स आर एमपैनल अंडर द मुख्यमंत्री अमृतम स्कीम, and through which we are giving that treatment to that lady, which are identified at our center, which are district hospital or a community health center. So we are giving the utilizing our private hospitals for the treatment of the cancer, because government hospital is not able to cater that load which we are receiving. Sir, UP is facing a problem that per day only 30 patients can be screened. In UT Chandigarh, we are going to have a program wherein the family planning clinics will be utilized for screening of the patient, because during these days, like whether it is for oral contraception, whether it is for property insertion, the patient has to undergo a PV examination. So we are not, that is a missed opportunity for screening of such cases. And secondly, we have trained all our doctors in the dispensaries. We are taking up the Ayush doctors for awareness generation, however, not for the actual screening. And third is we have a very good liaison with the PGI, because UT is very small and we have the opportunity of the medical college and the PGI MER with us. So that is it, family planning clinics. Actually, in Tamil Nadu, you have this CM health insurance scheme. What is your, I could not hear, what is your coverage area? Like you cover BPL people or everybody is covered, is a universal health coverage? So it's only BPL, but our family income is up to 72,000. In fact, we cover around 80% of the population we cover. Okay. And it's for around 1,000 procedures. Most of them it is only the secondary and tertiary care procedures. Coverage is up to 1.5 lakh per annum. But we have a certain high-end procedures like liver transplantation, renal transplantation, for which we give even up to 22 lakhs. And in Gujarat, this Maan Amritam Yojana, the coverage is BPL plus income less than 1.2 lakh per annum. So it is near about 80% population is covered under that scheme, Amritam scheme. And that gives only tertiary care treatment. 544 procedures are under this scheme. We should be concerned about NCDs, and whenever we talk about them, naturally these two names immediately come into our mind, because they are more and more becoming, people are getting exposed to these two type of cancers. My question is, if in a welfare state, in Tamil Nadu so many things are free, so many things are subsidized, you give a lot of things free. Similarly, Uttar Pradesh and Rajasthan, which are quite large in area, quite big population we have. And here if we launch something, looking at the purchasing power of the people, looking at the per capita income of the masses, it can be said, I agree that, if we at least create awareness that, you have cervical cancer, now you see how you will be treated. I think there is a danger, because I have seen that, whenever you conduct screening camps anywhere for anything, normally people expect, and there is an allegation that, if she was not aware that she was having this cancer, she would have survived more. But you told her that, you have cancer now, please see how you can get cured, because you are not covered by insurance scheme. So, and I think there is one more gap. I'm not saying that I'm asking this question. This is an observation. And I think all of us have to think about it also, because I'm also running Bhamashah Swasthya Bima Yojana for Rajasthan, and I also think about it many times. And this is also for Gujarat, Tamil Nadu, even Punjab is running an insurance scheme now. Whenever we launch such scheme, we actually fix a particular area. Like normally, we normally agree on BPL. If we see something common, that is BPL. If BPL person is there, he should be covered for the tertiary care, for secondary care. But I think there is a word between, rich people and BPL. They can afford going to a doctor and give 250 rupees and buying medicine of 2,000 rupees. But when it comes of such disease, even he is a BPL. So don't you think now all of us should go in that direction? There should be some cover for such population which looks above BPL, but actually they also have to sell their house, or who also have to borrow from the people even if they want to get a treatment. I think they are more vulnerable now even than these people. Sir, in Gujarat, we are implementing RSPY. RSPY is catering BPL families and unorganized workers only. But for tertiary care, we have covered that
families having income less than 1.2 lakh. And as per our database, 80% families are covered under that 1.2 lakh per annum. Even though for that cervical screening and breast screening program, we have declared that anyone, any woman can come to the Yojana, and they are eligible for the Yojana without any income limit. So that is the one more for the breast and cancer screening. Sir, you are absolutely right, sir. This is the compressed group which really needs an attention right now. Actually, the BPL is taken care many places. The high income group, they don't need anything from the government. But this real middle people needs care. But what we propose at the policy level is that they can come and join the schemes, maybe with a small contribution as a premium. So it may not be entirely free for the state to do it, little contribution, but even this contribution, if I calculate with the market rate, it will be something around 1/10 of the retail market insurance premium. So people will come, maybe we thought of doing it in the next version, sir. So in your CM health insurance scheme, you have a provision for that. Suppose a person wants to join this scheme, even if an individual comes to me and says, sir, I want to enroll to your health insurance scheme, please tell me how much premium I have to pay. Is there any clause like that? As of now, the present tender, it is not there. It is being proposed in the coming tender, where we thought we'll match the premium which is quoted for the rest of the population. So this is a it's very in the good idea policy because level. we are also exploring the possibility for the next round because The informal I think this discussion can with be- the public and other people, it's being welcomed. In fact, they feel that for getting a coverage of 10 lakhs, they need to pay around 10 to 15,000. But here, with even less than 1,000 rupees, they are able to get the same coverage. And good part is that it is backed by the government. See, when there is a grievance in the retail insurance, there is no one to care for him. Here, the entire backup, the government system is with them. That's a big advantage. That's what the people will. We are trying to explore, sir, in the next tender. I just wanted to add Yeah, one please. thing. In Punjab, we have two wonderful schemes where this demarcation is not there. One is the Mukhyamantri Cancer Rahat Kosh, in which 1.5 lakhs to anybody who's diagnosed, the money straight away goes to the institution. And similarly for the for any case, sir. Universal? Yes, sir. And then Punjab happens to be the only state in the country where hepatitis C treatment is absolutely free, sir. We just recently, but that's again sponsored by the Chief Minister. Even for private hospital? Any empaneled hospitals, yes. You are happening Private hospitals also, yes. अभी मैंने एक स्टडी पढ़ा था जिसमें ये निकल के आया था कि सेकेंडरी टर्जरी के लिए तो इंश्योरेंसेस है मगर प्राइमरी के लिए अगर मैं खास करके गुजरात की बात करूं, आई बिलोंग टू गुजरात, तो मेरे वहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सिविल हॉस्पिटल में जाना पसंद नहीं करते, वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पसंद करेंगे या ट्रस्ट में जाना पसंद करेंगे. तो क्या इस तरह से सोचा जा रहा है? आई डोंट नो अबाउट अदर स्टेट, में वहाँ रहा नहीं हूँ पर गुजरात से हूँ, सो उनका आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस फॉर ओपीडी और मेडिसिन और ये सब बहुत ह्यूज है. सो कैसे इसको देखा जाए? Actually, we have piloted in Mehsana district. For 3 years, that pilot project has been, we have do that project for OPD through ICICI Lombard Insurance. But our experience is not that much of successful in that pilot project. But we have proposed that thing in NHPS, National Health Protection Scheme, which is launched in 2017. So already we have proposed all these things, OPD, to cover in that NHPS. But we have to look in many of the objectives of that scheme and everything. So till that, OPD is not successfully covered under any insurance schemes. Maybe if I understand your question correctly, health insurance is not a replacement for the entire health system. See, we need a strong public primary care health system on which only this health insurance can run the business. See, otherwise, health care costs over a period of time, it is beyond the capacity of any government. So, in Tamil Nadu, we are very particular that the insurance will not spoil the present public health care system on a primary care. In fact, when we discussed with the RSBI, our state is the one state which has not taken the RSBI. One of the reason is that
we want reserve all those small procedures to the public health system. See, in that way, we'll give the service, at the same time it will strengthen the primary care system. That's ultimate. This Asha presentation from J&K, I also listened to your presentation in Tirupati, you made the same presentation. I just wanted to know one thing. You have done a very, I think for us it is an impossible kind of job. You have given Asha facilitator job to A&M, which looks quite convincing if we look at the numbers. And I think somewhere, if we look at our system, that if Asha facilitator is an A&M, then a very compatible kind of system looks to me. It seems very compatible thing to me. But thing is that A&Ms normally complain that they have many works to do. Whatever new campaigns we are doing, even if screening of NCDs we are discussing, we are saying let's train A&M for this also, let's train A&M for that also. Then we have put many IT systems where we expect them to fill many forms. So do you face such, some kind of resistance from them? Because I think it looks easy, but is it doable? Sir, this is the only question, most frequently asked question to me. When we place these CHOs and other cadres at DACs and BACs, and A&Ms as ASHA facilitators, these were those cadres who had stopped liking the work. पहली बात तो ये है सर, इन्हीं से रेजिस्टेंस आया, हम नहीं करेंगे. हमने उनको कुछ समझाया कि भाई साहब पूरे डिस्ट्रिक्ट में 5-6 लाख हैं, एक डिस्ट्रिक्ट आशा कोऑर्डिनेटर बनोगे यार. So we roped them in. और अगर हम देखें, what we focus in the program is 8 functionality parameters, 36 incentives, out of which there are 34 activities, and the grievances, monthly grievances. These are the 3 focus areas at all levels, from cluster to state. अभी 28, 29 को हमारी स्टेट की मीटिंग क्वार्टरली में लेता हूँ, तो यही 3 की फोकस एरियाज. अगर उन 36 इंसेंटिव्स को या आशा फंक्शनैलिटी पैरामीटर्स को देखा जाए, it is as such it was the mandate of their earlier jobs. It was a job of A&M, immunization है, MCH services है, अब CD NCD है, यही सब तो है उसमें. ये पहले भी उनको करना था. Whether it was A&M, whether it was MOPHC, whether it was a block medical officer, whether it was a chief medical officer or anybody in the state, in entire hierarchy. This was already the mandate of their job. तो कोई additional job तो था ही नहीं सर. कोई additional कौन सा job है उनको? हाँ, उनको आजकल अब क्योंकि organized force हो गई है, अब additional jobs मिलने लग गए. जैसे PHE वाला वो नलके का कनेक्शन ले लो तो 150 रुपया. अब उनको कहीं इलेक्शन में मिले, वो फोर्स बन गई. Now they enjoy this work. पहले वो कंप्लेंट करते थे हमारे पास और काम है, या उनके जैसे डायरेक्टर फैमिली वेलफेयर बोलेंगे मेरी एक्टिविटीज में वो खराब होती हैं. तो हमने उनसे पूछा कि साहब ये देखिए 36 एक्टिविटीज है, कौन सी एक्टिविटी आपकी नहीं है, या आप ही का तो काम है, सिर्फ हमने सीरियल नंबर लगा के दे दिया है और आपको इंसेंटिव. एक सेकंड, कैन आई आस्क यू टू. सो दीज आर 36 एक्टिविटीज सर. आप बताइए डायरेक्टर हेल्थ की कौन सी एक्टिविटी ये नहीं है, डायरेक्टर फैमिली वेलफेयर की कौन सी एक्टिविटी नहीं है. तो ये ऑलरेडी उनके जॉब में था. सिर्फ जिसने काम नहीं करना था ये उठपटांग बोलेगा सर. और लोग इतने खुश हैं, वो खुद ही इतना मजे में हैं काम करने वाले. अगर आप उनको हम निकालने की कोशिश करते हो, बड़ी बड़ी सिफारिशें लगाते हैं हमको मत दिखा, एंड दे आर एंजॉयिंग देयर वर्क नाउ. हमने तो सिर्फ सीरियल नंबर लगा के दे दिया और नहीं, मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ. मतलब जो आप बात कह रहे हैं, मतलब रियली इट लुक्स कन्विंसिंग. आप कह रहे हैं कि नाउ दे हैव स्टार्टेड लाइकिंग इट एंड इनिशियली दे डिड नॉट लाइक इट. मेरा यहाँ पे सवाल ये था कि आप मुझे इंटरनली ये बता सकते हैं कि if you evaluate whether you feel there is a difference, I give extra charge to anybody, you do this, you please do this also. And in our hearts of heart, we know after 1 month, whether this person has actually taken it or not. We all know it. We give extra work. Normally we keep on giving extra charges in medical and health department. But we always know after 1 month or 3 months, actually that person has taken it, or he has just fulfilled the responsibility that I was having an extra responsibility. So what is your assessment like? You have a statewide overall consensus, or some districts you have found that yes, people have been able to perform something, and uniformly you cannot say. Because this looks quite challenging. Sir, this was actually a big gamble when we did it. ये वो लोग थे जिनको वो काम करते, वो यूनियनबाजी करते थे. वो कैंटीन में जाके चाय पीते थे और 1:30 बजे बोलते थे मेरे को कंप्यूटर नहीं आता, NRHM वाले को बोलो. ये वाले लोग थे. तो बट जब हमने ये किया
Out of our 22 districts, sir, 7 to 8 districts are extremely so good कि किसी भी कंट्री के डिस्ट्रिक्ट के साथ वो कंपेरेबल है. फिर वो मिडिल क्लास डिस्ट्रिक्ट्स भी हैं, तो 4 मेरे लोअर क्लास भी हैं. और एक चीज हमने देखी इस सिस्टम में, जो अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में आशा प्रोग्राम ठीक नहीं है, उसका कोई भी प्रोग्राम ठीक नहीं, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक नहीं है, उसका HR भी ठीक नहीं, उसका एटीट्यूड ही ठीक नहीं. ये हमने एक चीज ये भी देखी, जो डिस्ट्रिक्ट अच्छा है आशा प्रोग्राम में, उसके अस्पताल भी अच्छे हैं, उनके अफसरों का एटीट्यूड भी अच्छा है, उनकी विल भी अच्छी है. सो आई कैन कैटेगराइज इन 3 कैटेगरीज. 4 मेरे लो परफॉर्मिंग हैं, वो उनकी ऑल काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स हैं, हायर लेवल की प्रॉब्लम्स हैं. तो जब तक वो चीज़ वो लोग CMO फॉर एग्जांपल इन वन टेली कॉन्फ्रेंस ही इज टेलिंग अस कि उसके BMO उसकी नहीं सुनते, उसका डिस्ट्रिक्ट हो ही नहीं सकता ठीक. सो एक डिस्ट्रिक्ट है वो खराब था, वहाँ एक अच्छा CMO आया तो एकदम वहाँ एकदम 1 महीने में ठीक. दीज आर वेरी एक्सपीरियंस कार्डर्स सर. वंस दे ये ट्रेन की तरह होते हैं, अगर ये चल पड़े ये बहुत बढ़िया चलते हैं, बहुत बढ़िया. और अब तो वो क्या होता है कि एक वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब एक डिस्ट्रिक्ट आशा कोऑर्डिनेटर को बोल रहा है कि मैं तो स्टेट में 4 बेस्ट में से, तो वो मजाक कर रहे थे अगर तुम बेस्ट हो तो बाकी तो काम ही नहीं करते होंगे. अब ये खुद जाके दे हैव एज्यूम्ड वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशंस इन द डिस्ट्रिक्ट, इन द ब्लॉक, इन द क्लस्टर्स. सो दे आर लाइकिंग इट. जो साइड पे आप बैठे हुए थे, आप फोरफ्रंट में. मंथली मीटिंग होती है सर रिलीजियसली, रेगुलरली और बड़ी स्ट्रिक्टली उसकी यही 3 कंपोनेंट्स के साथ सारी इवेल्युएशन होती है. हम पूरा वॉच, वो जो बटन आप बोल रहे थे, ठीक ठाक बटन रखे हुए हैं. जहाँ पे वो हमने क्वार्टरली मीटिंग की, हम उनको खुद बोलते हैं बताओ आपका कौन सा ब्लॉक खराब है, वो 8 पैरामीटर्स पे और इंसेंटिव्स पे, और 3 महीने फिर उन ब्लॉक्स में घूमते रहते हैं, बताओ क्या प्रॉब्लम है. सो इस तरीके से सर. और पूरे टाइम पे आशा के इंसेंटिव सर, मैंने मतलब इसमें मैं यूज़ कर रहा हूँ लफ्ज़ क्या किया इस साल कि भैया ये हैंड ओवर ही कर दो मेरे को. ये जो फाइनेंस वाले हैं और ये अकाउंट्स वाले ये बहुत घुमाते हैं सर. ये फ्लेक्सी पूल है, ये मिशन पूल है, ये फला पूल है, 4-5 पूल है, तो अपने समय में जल्दी आते नहीं हो. हमने बोला जी आशा के आरोपी की जो इंसेंटिव्स हैं वो साइड पे आप रखिए, हमारी इजाज़त के बगैर आप किसी डिस्ट्रिक्ट को कुछ नहीं देंगे और हम बताएंगे कैसे देंगे. सो वो कंट्रोल ले लिया हाथ. और साथ में ये इतना ऑब्जेक्टिव और मैथमेटिकल सिस्टम बन गया है सर. ABCD 4 कैटेगरीज है, उसके बाद वो 36 इंसेंटिव्स हैं, वो प्रोग्राम्स के हैं, मैटरनल हेल्थ के हैं, चाइल्ड हेल्थ के, ये एडोलसेंट हेल्थ के, यही इंसेंटिव्स हैं 36 मिला के बनते हैं, छोड़ के जो 8. तो हमको पता चल जाता है मैटरनल हेल्थ वाला काम कर रहा है कि नहीं कर रहा. चाइल्ड हेल्थ वाला आशा प्रोग्राम में से सब कुछ निकल आता है सर. जो क्वार्टरली फाइल बनती है ना उनकी, 15 दिन हमको वो कंपाइल करने में बाद में लगते हैं स्टेट. उसके बाद हम प्लानिंग वालों को बोलते हैं ये देखिए आप, फिर फाइनेंस वालों को बोलते हैं ये देखिए आप, प्रोग्राम मैनेजर्स को बोलते हैं देखो भैया तेरा मैटरनल हेल्थ का क्या हाल, तेरी एडोलसेंट हेल्थ का क्या हाल. सो वो क्रेस्ट एंड ट्रफ्स वो निकल के आते हैं हर क्वार्टर के बाद. तो एक अच्छा एक सिस्टम, वी आर सेटिस्फाइड सर. और जब काम नहीं करता उसको हम चिट्ठी भी थमा देते हैं 3-4 महीने. तो जो अपने को आशा सुपरवाइजर या फैसिलिटेटर की मानदेय जो मतलब अपने को सैलरी जो अलाउड होती है NHM में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, आप उसमें से इनको एक्स्ट्रा काम करने के लिए एक्स्ट्रा इंसेंटिव दे देते हो. सर ये रेगुलर हेल्थ डिपार्टमेंट के, हाँ नहीं, मैं समझ गया, ये रेगुलर सैलरी हेल्थ डिपार्टमेंट से ले रहे हैं, वो तो ले ही रहे हैं. हम उनको 2 कंपोनेंट में देते हैं सर. अच्छा, एक उसको ऑफिस एक्सपेंसेस देते हैं और इसको ये ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस देते हैं जिसमें वो टेलीफोन कर पाता है. तो ये आप NHM के उस आशा NHM में में से दे देते हो. 618 एनीवे यू आर सेविंग टू गवर्नमेंट Lot ऑफ of money, इंडिया, sir. क्योंकि आपको तो 600 90% मिलता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से. जी जी एज फार एज आई नो. जी सर. तो इसलिए आपको तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, आपको तो 90% क्योंकि जी 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 सर. तो आप जैसे मान लीजिए आपको 15,000 तनख्वाह मिली एक डिस्ट्रिक्ट आशा कोऑर्डिनेटर जी सर, और आपने एक आदमी को एक्स्ट्रा चार्ज दिया 3,000, तो 3,000, तो आपने एक तरह से 12,000 रुपए सेव बचाया किए सर. हैं. तो आप वो 3,000 की परमिशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ले लेते होंगे कि भाई हमें पूरी सैलरी नहीं चाहिए, हमें तो 3,000 का एक्स्ट्रा इंसेंटिव. क्योंकि ये मॉडल चलो हम आशा के लिए हमें नहीं चाहिए, क्योंकि आशा के लिए तो हमारे पास सर दिस इज द नीड ऑफ द आवर सर फॉर ऑल काइंड. क्योंकि हम तो इस सिस्टम को ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन जो और प्रोग्राम्स में जब हम देखते हैं तो डेफिनेटली ये मॉडल हम लोग इस तरह से अपना सकते हैं. मेरे ख्याल से सभी स्टेट्स मानेंगे कि आज बहुत सारे वर्टिकल प्रोग्राम्स में हम लोगों को बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट या ब्लॉक लेवल पे लोग लगाने के लिए कह दिया जाता है, और फिर वो हमारे रिसोर्स एनवेलप को खा जाते हैं, बिकॉज रिसोर्स एनवेलप्स आर नॉट इंक्रीजिंग. All of us are working in NHM, so our resource envelopes are not increasing, programs are increasing, posts are increasing, so they are eating into our resource envelope. So that's why I think this idea can be taken for other vertical programs. सर जैसे लोग बहुत सारे काउंसलर रखते हैं, आर्स काउंसलर, दिस काउंसलर, एक ही काउंसलर रखिए, थोड़ा थोड़ा पैसा ज्यादा दीजिए. ये आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद बोलती है कि आप सर्विसेज आउटसोर्स कीजिए, मैन पावर नहीं कीजिए. एक आदमी को 2-4 काम दे दीजिए, उसको पैसा एक्स्ट्रा दे दीजिए. तो दिस, और ये आज हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलने लगी, हमने ट्राई किया और ठीक रहा. It's a good idea, sir, because many of the time what happens, it's a demotivation for regular staff
for ASHA and we are incentivizing them. So our regular staff is not working properly, and this seems that are work of that ASHA and everything. So maybe it's a better idea to give a motivation to our regular staff also. So if there is no other question, yeah, one more. You want a mic? Maybe identify yourself and you can tell me to whom you are. I'm Dr. Nirman Pandya. I'm looking after MD India Healthcare Insurance, TPS Services. We settle claims on behalf of insurance company. This was with reference of Jain sir, one specific issue that any state government having a scheme for all. So I'm working on a scheme with Union Territory of Diu Daman and Silvassa. They have a very good scheme of 2 lakhs rupees insurance. They have insured the entire population. They have made the 3 categories. One is for BPL, one is for below 1 lakh, below 1 lakh income, and the third category is APL. Any citizen can opt for the policy by paying the equal premium. By negotiating with the insurance companies, on a large scale, the premium is very low, as well as 370 rupees a premium for 2 lakhs rupees coverage. And the payment is for all the diseases, primary, secondary and tertiary, and it covers the private hospitals, empaneled private hospitals, big hospitals like in Mumbai, all big hospitals, and they cover right from diarrhea to transfusion, organ transplantation, everything. And the payments are done on CGHS rate list. So that is one of the scheme. Thank you for the information. Sir, एक question मैं पूछना चाहूँगा. Sir, 2007 में I come here for a study, एक course के तहत. तो एक insurance ये हम कहीं बगड़ू PHC है कोई, उसके एरिया में गए थे सर. मुझे अगर correctly याद है. वो बिल की 2 cooperatives थी, वो competitors थी. So जो कस्टमर उनको दूध का लीटर या जो भी दूध देता था उनको, गाय वाला या जो गांव वाला देता, वो 1 रुपए का उसका कुछ वो इंश्योरेंस के खाते में डालते थे. और वो टाई अप था प्राइवेट हॉस्पिटल से उस वक्त. कुछ उन्हीं कॉपरेटिव्स ने ही टाई अप कर रखा. तो वो अभी चल रहा है सिस्टम या कुछ चेंज? आप तो जब लोगों को NRHM बोलना नहीं आता था, NHRM बोलते थे हाईएस्ट लेवल. आप लोग वो काम करते हैं फेस्टिवल्स, और हम देखे थे यहाँ ANMs को आपने अनटाइड में से मोबाइल दिए थे, कुछ बड़े अच्छे सिस्टम आप लोगों, तभी आप लोग यहाँ हैं आज. आपने बड़ा जल्दी स्टार्ट किया था. तो वो वाली कॉपरेटिव को इंश्योरेंस की बात चल रही है, तो वो चल रहा अभी या बंद हो गया सर? मुझे ये डेयरी कोऑपरेटिव से पता करना पड़ेगा. मुझे लगता है कि ऐसा कोई सिस्टम फिलहाल नहीं है. नहीं, ऐसा कोई सिस्टम अगर होता, नहीं वो हमारी जानकारी में होता. मेरे ख्याल से ऐसा कोई सिस्टम अगर है, लेकिन आपने बड़ा अच्छा आइडिया दिया है. बहुत बढ़िया सिस्टम है. दिस इज अ गुड आइडिया. इंश्योरेंस तो आप लोग बोलने लगे, आप वो लोग वो तब करते थे यही पे. ऐसा हो सकता है क्योंकि मिल्क कोऑपरेटिव की स्कीम के बारे में जानकारी मुझे वो करते थे, वो वापस नहीं करते. Okay. I thank all the panelists and MD NHM and Government of Rajasthan for giving the opportunity. Thank you. Thank you very much, sir. I request MD NHM Mr. Naveen Jain to present mementos to our eminent panelists and then give a conclusion address to conclude the session also with your address, sir. To our guests. These all are our eminent dignitaries from various states of India talking about the health practices in their states. A group photo with sir will also be requested with our state representatives. Also an industry expert, Mr. Priyaranjan Avinash from Psy Clinic, E-Psy Clinic. Sir, a group photo with all of them, all the state representatives with the MD NHM of Rajasthan. Thank you, sir. Now we request for your remarks, conclusion remarks, and then we'll have some awards. Thank you. And then we'll. I think it was a
वेरी बिग डे, वेरी लेंथी डे। आप में से कई लोगों का कैपेसिटी अब ख़त्म हो गया होगा, लेकिन आई थिंक इट इज़ गुड टू लर्न। मैं ये कह सकता हूँ कि मैं तो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ कि सुबह से हम लोग बैठे हैं, लेकिन बहुत सारे नए आइडियाज़, बहुत सारी नई बातें और नए कंसेप्ट देखने को मिले। बहुत सारा सीख लिया, बहुत सारी बातें सुन चुके हैं, लेकिन जब भी इस तरह के किसी सेमिनार में बैठते हैं कोई ना कोई आइडिया क्लिक करता है। मैं एक बात कहना चाहूँगा, कई बार ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला जो आइडिया दे एग्जैक्टली वो आइडिया मेरे लिए यूजफुल हो, लेकिन मैंने ऐसा बहुत बार महसूस किया है इस तरह के सेटअप में कि उसके आइडिया से मेरे दिमाग में एक बिल्कुल नया आइडिया आ सकता है, बिकॉज आई मे रिविजिट द प्रोसेस, मैं कुछ उसमें ऐड कर दूं और फिर मुझे कोई ऐसी चीज मिल जाए जो मेरे स्टेट और मेरे सिस्टम के लिए सही हो। मैं समझता हूं कि ये सबसे बड़ी चीज है। मैं आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, हम डॉक्टर मेहता को सुन रहे थे J&K से, मैंने क्वेश्चन भी पूछे उनसे आशा के बारे में। मेरे दिमाग में एक फीलिंग हमेशा रहती है, क्योंकि आजकल जो सेक्रेटरी हैं वो मेरे बैचमेट हैं डॉक्टर भंडारी। एक्चुअली J&K में दे बिकम सेक्रेटरी 2 years अर्लियर, इसीलिए हम अभी स्पेशल सेक्रेटरी हैं और वो सेक्रेटरी हैं। बट ही इज़ ए डॉक्टर एंड तिरुपति में उनसे मुलाकात हुई। मैं उस समय उसकी हालत देख रहा था, बिकॉज दैट वाज 29 to 31 अगस्त, और आपको पता है उन दिनों में जम्मू कश्मीर में क्या चल रहा था, ऑल ऑफ अस नो पिछले 2 महीने से क्या चल रहा है। और मैं रियली चाहता हूं कि हम सब लोग इस बात को एक्नॉलेज करें आज फिर दोबारा इस मंच पे। हम ये क्वेश्चन तो ठीक है मैंने पूछ लिया कि वहां की आशा क्या करती है क्या नहीं करती है, मैं तो इतना कहता हूं कि इन हालात में काम करने की सोचना मेरे ख्याल से ये भी कोई कम काम नहीं है। हम में से शायद बहुत सारे लोग, मैं ये एग्जांपल दिया करता हूं, आप मेरे स्टाफ से पूछ सकते हैं, ये मेरा पेट स्टेटमेंट है। जिन लोगों ने मेरे चैम्बर में बैठ के किसी को पीस ऑफ माइंड देते हुए देखा है, दे कैन वाउच फॉर इट, कि यार मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन मैं ये बहुत बार कहता हूं, लोग मुझे ज़्यादातर ये जब एप्लीकेशन लेके आते हैं ट्रांसफ़र के, रीलोकेशन के, और वो ये कहते हैं सर मैं सिरोही लग गया, सर आप मुझे जयपुर लगा दीजिए, सर मैं बाड़मेर लग गया, सर मुझे जयपुर लगा दीजिए, सर मैं तो बांसवाड़ा लग गया हूँ, सर मुझे झुंझुनू लगा दीजिए, सर मैं उनसे एक ही बात पूछता हूँ, मैंने कहा तुम J&K में थोड़ी लगा दियो हमने। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि उन लोगों को तब पता चले जब इन हालात में काम करना पड़े। मैं समझता हूँ कि आई शुड ग्रेटली एक्नॉलेज दैट आवर पीपल, आवर फ्रेंड्स आर वर्किंग देयर इन दीज सर्कमस्टेंसेज, और हम सोच रहे हैं यहाँ पे MPR भेजने की, हम बात कर रहे हैं कि रिजल्ट कंपाइल करके भारत सरकार को रिपोर्ट भेजें, और आप क्या कंपाइल कर रहे थे मुझे ध्यान है, वो किस तरह के SMS से डील कर रहा था, भाई आज कितनी इंजुरी हुई और आज कितनी डेथ हुई। तो मतलब द सेम वर्क इफ आई हैव टू डू, आई कैन अंडरस्टैंड दी एगोनी। अगर मेरी सारी एनर्जी मुझे सिर्फ क्राइसिस मैनेजमेंट में लगानी पड़े, अगर हम में से हर आदमी अगर महीने में 25 दिन क्राइसिस मैनेजमेंट करे तो 26वें दिन देखने को बनता है कि हमारी एफिशिएंसी कितनी रहती है। आई थिंक आई शुड एक्नॉलेज इट एंड वी आर प्राउड के आप ऐसे सिस्टम में भी आशाएं चलाते हैं, आशा कोऑर्डिनेटर चलाते हैं, तो दिस इज रिमार्केबल। और थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू जयपुर ऑल द वे टू शेयर योर आइडियाज। आई थिंक यू हैव गिवन अस सम हिंट फॉर सम अदर थिंग। तो आई थिंक क्योंकि कोई ना कोई आइडिया से कोई ना कोई चीज़ तो होती है। मैं बाकी सब स्टेट्स का भी बहुत बहुत थैंक्स करूंगा। आप तमिलनाडु से आए, आपने जो थी शेयर की, सिर्फ इश्यू ये रहता है, मैं नॉर्मली हम लोग तिरुपति में भी सब MDs यही शिकायत करते हैं मनोज झालानी साहब से, और हम यहाँ पे हम आयोजकों से भी यही शिकायत कर सकते हैं, क्योंकि मिनट टू मिनट तो मुझे भी सुबह देखने को मिलता है। तो मैं यही शिकायत कर सकता हूँ कि इफ वी कैन कॉल 5 people लेस बट वी कैन गिव सम मोर टाइम, आई थिंक दैट इज जस्टिफाइबल टू देम एंड इट इज ऑल्सो इक्वली good to us, because then we can actually look into various things, then we can learn more, but I think it can be worked out. और यूपी में सर्वाइकल कैंसर का चल रहा है, नेचुरली हर स्टेट आज एक दूसरे से सीख रहा है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, मैं MD उत्तराखंड के साथ बैठा था, तो मैंने कहा कि यार हमने आशा सॉफ्ट किया है और तुम तो देखने आए थे 1 साल पहले, क्या हुआ? तो मुझे बड़ी खुशी हुई जब उसने मुझे कहा कि सर आपको मेरा लेटर नहीं मिला क्या? मैं आपको ये इस तरह की सेमिनार की लर्निंग की बात बता रहा हूँ, क्योंकि आई शेयर्ड आशा सॉफ्ट फॉर द फर्स्ट टाइम इन जुलाई फर्स्ट वीक इन शिमला लास्ट ईयर। जो नेशनल सेमिनार था, ये 3rd था, वो 2nd सेमिनार था, तिरुपति में 3rd था। तो ही टोल्ड मी कि सर आपको पता नहीं चला कि हम तो 6 महीने पहले उसको आशा किरण के नाम से ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं। तो मतलब इट गिव्स यू सो मच सेटिस्फेक्शन कि जो काम आपने राजस्थान के लिए किया वो इंप्लीमेंट भी कर चुके हैं, और उन्होंने कहा कि हमारे बड़े अच्छे रिजल्ट उसमें आ रहे हैं। तो आई थिंक ये शेयरिंग की पावर है। और कोई अच्छी बात जो मैं यहाँ की आशा के लिए
या तमिलनाडु में किसी एएनएम के लिए सोची जा रखी है, तो वो बहुत ज्यादा सर्कमस्टेंसेस का डिफरेंस नहीं है। अल्टीमेटली प्रोसेसेस सारे सेम है, सिर्फ फर्क ये है कि आपने अपनी एएनएम को कुछ अलग इंसेंटिव, कुछ अलग काम दिए हैं, हमने हमारी आशा को कुछ अलग काम, कुछ अलग इंसेंटिव दिए हैं, जिससे कि कोई भी मॉडल को थोड़ा सा कस्टमाइज किया जा सकता है। एवरीथिंग कैन बी कस्टमाइज। इसीलिए मैं कहता हूं कि जब प्रोडक्ट को हम कस्टमाइज कर सकते हैं, मैं समझता हूं कि प्रोसेस को भी कस्टमाइज कर सकते हैं। अदरवाइज हमारे बहुत सारे आइलैंड्स बनते जा रहे हैं, आइडियाज के आइलैंड्स बनते जा रहे हैं। आई थिंक ये बहुत कॉमनली हम बोलते हैं कि हम आइडियाज के आइलैंड्स बनते जा रहे हैं, अलग अलग स्टेट अलग अलग प्रैक्टिस कर रहे हैं, और हम जब भी करने लगते हैं तो हम दोबारा अपना प्रोसेस करते हैं। ठीक है, लैंग्वेज की वजह से मुझे करना चाहिए, क्योंकि आपकी लैंग्वेज मेरे काम नहीं आ सकती है। हमारे यहाँ हो सकता है कि कुछ एक्टिविटी आपको प्लस करनी पड़े, माइनस करनी पड़े, लेकिन पूरा प्रोसेस, एक पूरी आरएफपी बनाने में कितना समय लगता है? ये बात हुई थी कि हम 15 दिन में आरएफपी बनाते हैं, इसीलिए गलतियां करते हैं। लेकिन अगर उत्तराखंड ने एनयूएचएम की आरएफपी बनाई है, तो राजस्थान अगर उसको अडॉप्ट करता है तो 15 दिन में जरूर एक अच्छी आरएफपी बन सकती है। लेकिन अगर हम पहले दिन से पहला पेज लिखना शुरू करेंगे, देन 15 डेज इज नॉट द एडुकेट पीरियड। तो मैं समझता हूं कि इस तरह की सेमिनार से हम लोगों ने कुछ लर्निंग की है, और सुबह से हम लोगों ने यहाँ पे जो भी सीखा है, जो भी हमें अच्छा लगा है, हम लोगों ने आपस में शेयर किया है। और आई थिंक हमने जो नेटवर्किंग, एक्चुअल नेटवर्किंग यही है कि जो हम आपस में एक दूसरे से 1 या 2 या 3 बातें सीख सकते हैं। हम लोगों ने जो भी काम किए हैं, हमें कुछ एमडीज ने, कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि भाई आप हमें ये थोड़ा और डिटेल में बता दीजिए। तो मैं बड़ा खुश हूँ कि हमारे कुछ लोगों ने, वो यहाँ से गए बीच में, वो लंच टाइम में उन लोगों को लेके गए, उन्होंने वहाँ उनको डिटेल प्रेजेंटेशन दिया, क्योंकि हमारा ऑफिस यहाँ से सिर्फ 5 मिनट के रास्ते पे है। और मेरी एक फेमस बात है जो मैं मेरे प्रोफाइल पे भी लिखी रहती है हमेशा, ए कैंडल लूजेज नथिंग बाय लाइटिंग अनदर कैंडल। और मेरे ख्याल से ये बात आइडियाज पे बिल्कुल 100% लागू होती है। ये बात आइडियाज पे 100% लागू होती है कि आपका आइडिया अगर इंडिया के काम आए, मैं समझता हूं कि इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती, क्योंकि आफ्टर ऑल दिस इज आवर कंट्री। तो मैं आप सब लोगों का यहाँ आने के लिए दोबारा से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, और साथ ही आप लोगों का थैंक्स करता हूँ कि आप पूरा दिन हमारे साथ रहे, आपने अपने आइडियाज़ को शेयर किए, और मैं मानता हूँ कि हम आगे आने वाले समय में इसी तरह से मिलते रहेंगे। मैं एलीट्स का अगर थैंक्स नहीं करूँगा तो मेरी ड्यूटी पूरी नहीं होगी, क्योंकि आफ्टर ऑल ये सब जो है आपने ही हमें दिया है। यहाँ बैठने का एनवायरनमेंट, बीच में टी, लंच, ये सब आपकी वजह से है, और मैं समझता हूँ कि शायद हमने पूरा रिपे भी कर दिया है, इसीलिए कैन वी हैव डिनर। सो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।